Okay. So list is actually transverse inclination. List is transverse inclination. Inclination of ship due to external or internal? Sir, internal. Yes, due to internal factor. And this internal factor actually controls shift of center of gravity from center line. Okay, so let me just explain. Suppose this is a vessel here, and you are looking the vessel in transverse direction. So you know it very well. Transverse direction is port to starboard direction. The vessel could be like this, right? Yes. We are looking the vessel in transverse direction. And for simplicity, we are considering a box shape vessel. Now, she is upright. Upright, let's make the water line. So this is your water line. Let me write here, water line. Maybe it is represented like this. Doesn't matter, water line. And here, water line is a straight line. Water line is Straight line. straight line. इसका भी significance है. If it is a straight line, that means we are dealing with intact stability, statical stability. This Okay. statical. Okay, 1 second. Statical stability. Statical stability का मतलब होता है still water. Okay. By the way, if you are in waves and all, your water Mm. line will be like this. Yes, sir. Computation will be very difficult. That is dynamic stability. Okay. We are Okay. not talking about that. We are talking about that you are in still water. Water line is the straight line. Stable. And if there is water line is a straight line, that means suppose this is your center line. Okay. And here, this is G, and the weight is acting vertically downward, And downward. right? Yes. And this is Mm. the underwater portion, right? Yes. Geometrical center of underwater portion is Yes, B, sir. and force of buoyancy Center of is acting buoyancy. vertically upward. Upward. ये दो force हैं, equal and opposite. So this is upright condition. This is called Upright. upright condition. And why I'm saying upright? Shift of COG from center line. Yani upright condition में COG, center of gravity, is at the center line. Very important aspect. As long as the center of gravity is at the center line, the list is 0. Okay. Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. So internal factor हमने क्या किया? What we have done with this internal factor? What we have done that this center of gravity is shifted, and it could be because of loading, because of discharging, or Discharging. because of shifting. Shifting. Whatever. Maybe bunker, maybe cargo, maybe ballast, whatever weight. 3 operations: loading, discharging, and shifting. All right. Yes, So sir. we will study the simple form. Like suppose we shift something. Suppose there was a small weight here, that is small w, and the ship was upright. Okay. And now I shifted this weight here like this. And this I will show you in this second diagram.
I think I will elaborate here. And yeah, so weight is acting downward, right? Yes. Yes. And center of buoyancy. Okay, wait a minute. Center of buoyancy is supposed to act like this. Yes. And now there was a small weight here. This W, you shifted this weight here. Okay, from position 1, you shifted to position 2. So Yes, sir. obviously, this center of gravity G Will shift. will shift in this direction Yes. by the same proportion, G to Yes. Yes. G1. Are you getting it? Yes. Sir. So this weight is going to, oh my God. Okay, let me see if I can remove this. Yeah. It will act from G1. Yes, As sir. the weight is shifted from 1 to 2 in this direction, port to starboard direction, this is starboard, this is port, the center of gravity of the ship will shift like this. And this will is given by GG1 is equal to W into D upon W. You remember this formula? Yeah. Yes, sir. Hmm? Yes, sir. So this distance D could be large and this GG1 could be small because this is the ship is having a big displacement. Okay, there's a Yes. huge displacement on the ship. So it's not that the center of gravity will also shift uh, equal to distance D. No, it will be a very small change in center of gravity, but it is going to shift. Okay. Now you are having two forces which are equal and opposite, but Yes, sir. they are separated by some distance. ये देख रहे हो? ये हो गया. Yes, sir. So a list moment is formed. List moment. Moment. ये लिस्ट मोमेंट क्या कर रहा है? देखो ना इसकी डायरेक्शन. ये इधर को Yes, टर्न sir. करेगा, ये इधर को टर्न करेगा. List Yes, moment sir. is formed. What is the value? List moment. In short, we can write list moment is equal to W into D, W into D. right? We can define the unit also, ton meter, Yes, sir. and we can also name if it is shifting towards starboard. If it is listing towards starboard, we will name starboard. If it is towards port, we will name towards port. Port Port. starboard, whatever. Okay. Yes, Name sir. port or starboard. So in this case, it is Starboard. list moment is created. Now let's see what happened. Definitely the ship is start listing because the Yes, sir. center of gravity has changed. The ship is start listing. So the listing part we will describe like this. I would have shown you the typical diagram, but here I'm trying to explain with the help of these three diagrams. The ship will list like this. And Okay. here the center line, this has come like this. Okay. And जो Okay. GG1 था, G इधर था तो G1 हो जाएगा. Suppose G was here. So Mm. GG1 is somewhere here, right? Yes, sir. Right. So the weight W will act vertically downward. Mm. This weight, Yes, sir. right? Yes. And suppose the water line, initial water line was maybe here, right? Yes. Okay. A new water line will be somewhere here. Water line will Yeah. be horizontal, no? It's always Yes. 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 horizontal. That means whatever volume you lost here, you will gain this side. Yes, sir. That means the center of buoyancy will It should shift be. from here to here to the Yes. extent it will come directly below Center of gravity. G1. G. So what is happening? Center of buoyancy will move. Let me just write here. If you want, I can give you the PDF of this. Will move towards lower side. Okay.
Okay. Center of buoyancy is going to move towards lower side until it comes directly Below. below G1. new center of gravity. Gravity. That is G1. G1. Got it? Yes. So now the force of buoyancy is going to act like this. Okay. Yes. So this is force of buoyancy. This is force of buoyancy. It is going to cut somewhere here. Yes. So we are having a beautiful triangle. This triangle. And here it is 90 degree. Yes. Right? Yes. Yes. And this angle is nothing but list angle. Theta. So you can see from trigonometry triangle G1M. If we take this, what do we realize? What do we realize? We realize that tan theta Tan theta is equal to mg upon gg. G1 upon Gg on m theta. Gm. But this upon this, Yeah. Okay. Perfect. right? Yeah. And theta is the list. Theta is list or angle of list, to be more precise. Okay. But GG1 we already calculated. W into D upon D upon W. Displacement. displacement into G. That is tan theta. अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं. मैं बोलता हूं इसको कहेंगे लिस्ट मोमेंट. ये वाले चीज को. हाँ. Okay. लिस्ट मोमेंट W into GM tan theta. अभी भी इससे मेरा कंसर्न नहीं है. सपोज शुरू में ही जहाज लिस्ट पे है, तो इसको लिस्ट मोमेंट ना बोल के वी विल से इनिशियल लिस्ट मोमेंट. Okay. What will say? Initial list moment. If the ship is initially listed. If the ship is initially listed by angle theta. So list moment हो जाएगा ILM यानी initial list moment. Okay. Yes. And the value of ILM will be W into GM into tan theta. theta. इसको जरा याद रखो, कई बार दिया रहेगा. सेम वे अगर फाइनल लिस्ट निकालना है, सपोज यू लोडेड समथिंग ऑन द पोर्ट, समथिंग फॉर द स्टारबोर्ड, यू डिस्चार्ज समथिंग हियर एंड देयर. सो लेट्स मॉडिफाई दिस फॉर्मूला फर्दर एंड आई एम सेइंग द फाइनल लिस्ट. Okay. Okay, 1 minute. Final list. I'm just modifying this formula. इसको ऐसे लिखेंगे tan theta. Instead of LM, we will write FLM. FLM. Final list moment. Upon final displacement. Into GM final. Everything final. Okay. So if you remember these terms, I think the life will be much easier for you. Tan theta is equal to final list moment WF into GM. GMF. Now you must have recalled that I am talking about a term called list moment and final list moment. Okay, let's try to understand this concept with the help of with the help of this simple seesaw. I think that will be helpful. Suppose you are having this a kind of balance, and if I load something here, Yes.
weight W, or let's keep it this way. No, I just want to discharge. I want to discharge this weight here, this W, Okay. and its distance is D1 from the center line. Okay. So what will happen? Suppose this is your starboard side, this is your port side. Imagine the ship is also going to behave like this. If I remove the weight W from here, what will happen? In which direction it will turn? Starboard. It will list like this, yes or no? Yes. So we can write like this: list moment will be W into D1 D1. ton Yes. meter towards starboard Yes. for discharge. Yes or no? Or Yes, sir. list moment 1. This is list moment 1. That if I discharge. And suppose if I load here the same amount of weight and distance I take D2. So the list moment 2, yani loading, this is discharging, this is loading. List moment 2 will be W into D2 ton meter. And again, the direction will be starboard. Yes. Yes. Make sense? Yes, sir. Whether I discharge from port side or I load on the starboard side, my list moment is going to be created towards its starboard. Is there any confusion? No, sir. No. No, sir. All right. So what is shifting? Shifting is nothing but discharging and loading. Shifting is nothing if you are taking something you are discharging from 1 and you are putting loading at 2, or you simply shift by distance t. Suppose this is the distance t. Yes, sir. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. So this is a starboard, this is 5 kg apple and 2 kg apple is 7 kg. So W into D1 plus W into To D2. D2. And that is actually starboard, ton meter starboard. Now Yes. W is common, D1 plus D2. D1 plus D2. Now W into D. D1 plus D2 is D. That is distance shifted. Okay. So the beauty is here, whatever distance, now this is the ship. And you are looking the ship in transverse direction. Okay. Still, I'm making the box shaped vessel. This is starboard, this is port. Whatever you shift like this. Okay. Distance Okay. D. Whether you cross center line or no, don't cross, doesn't matter. If Yes. you are shifting port to starboard, list moment will be towards starboard. Towards starboard. And how it is calculated? W into distance shifted. Yes. All right. Yes. So when we are solving the list problem, we need to consider two factors. Let's write down the formula. Tan theta is equal to final list moment divided by WF W. into GMF. Yes. So we need to calculate final list moment. Okay, that is algebraic sum of list moment. Yes. पोर्ट का है तो पोर्ट में जुड़ जाएगा, स्टारबोर्ड का तो स्टारबोर्ड में जुड़ जाएगा, पोर्ट और स्टारबोर्ड है तो दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसका ज्यादा होगा वो। ठीक है। Okay. WF इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you are loading, you will add. If you are discharging, Yes, you will subtract. If you are shifting, you don't do anything. Yes. But this portion GM, Yes. we need to consider. Okay. If you have shifted, shifted in the horizontal direction, the GM will not change. Okay. भाई शिफ्ट तो आप जो है ना हॉरिजॉन्टल पोर्ट टू स्टारबोर्ड में कर रहे हो ना. हाँ हाँ. GM is a vertical distance. Yes, sir. But तो same रहेगा. if you shifted in this direction diagonal, if you are shifting port to starboard, no problem.
But if you shift it something like this in diagonal, it will be having two component. Okay. So this component port to starboard will cause list, and Okay. this component will cause change in GM. Okay. इस चीज को ध्यान रखना चाहिए. You need to consider shift In in COG. hmm, COG shift हो रहा है या नहीं हो. नहीं, Alright. So whether we should go directly or whether we should create a question. I think we should create a question. question. Okay. मैं एक जो ना एक मॉडल क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ. ठीक है. Okay. उसके बाद जो है फिर देखते हैं whether, and I will try to include many concept with this one question itself. Okay. 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 Suppose this is the example. अगर ये कर लिया तो बात समझ में आनी चाहिए. Displacement is given. Suppose the displacement is छोटा जार ले लो 20,000. Okay. Okay. Suppose displacement is 20,000 ton and km 8 meter, Okay. kg 7 meter. Okay. Okay. And theta is given. Theta is suppose 5 degree starboard. Okay. Okay. Simple. Mm-hmm. We need to find initial list movement. कितना हो जाएगा initial list movement? Initial यही movement is कैलकुलेट कर लेते हैं. इनिशियल ये दिया रखा है. व्हाट विल बी इनिशियल लिस्ट मूवमेंट. एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन जोड़ने हैं. फॉर्मूला W W into D. GM into GM into tan theta. tan theta. Okay. सो लगाओ. कैलसी होना चाहिए तुम्हारे पास. 20,000 multiplied by the GM is KM minus 1 हो जाएगा सर. 20,000 I have into 1. taken the simple number just to understand the concept. फिर इसमें बिल्ड करते जाएंगे. 20,000 स्मॉल वेसल So 1749.773. 1 minute. My Kelsey is giving up. Wow. No, it's refusing to work it. कितना आया 17 49.773. 17 49.773. 49.73. Yes, इतना sir. सब एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है. We can round off to 1749.8 Okay. ton meter starboard. Okay. Okay. And now there are some several operations. इसमें मल्टीपल वेट्स किए हमने. लोडिंग किए, डिस्चार्जिंग किए. तो उसका हमें वो देखना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं. रिमार्क Wait. वेट Wait. अब हमें चाहिए केजी. केजी के लिए क्या करेंगे, केजी लिख लो या डिस्टेंस फ्रॉम कील. Okay. फाइनल केजी निकालने के लिए. और डिस्टेंस फ्रॉम कील लिख लो. डिस्टेंस फ्रॉम कील नीचे से. ऑलराइट. और ये हो जाएगा वर्टिकल मूवमेंट. Moment. ऐसे लिख लो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन. Okay. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन कितना है, और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा लिस्ट मूवमेंट. Longitudinal. Yeah, list moment. लिस्ट मूवमेंट. List moment.
सबकी यूनिट लिख लीजिए, इसकी टन लिख लो, टन। इसको केजी लिखें क्या? अरे केजी ज्यादा अच्छा, है, केजी बेटर है। केजी। केजी बेटर। ये हो गया टन मीटर, यस। ये मीटर हो गया, मीटर। और टन ये मीटर। टन मीटर। अब शुरू करते हैं हम पहले शिप से। हमारा शिप जो था, देखो क्वेश्चन भी है साथ के साथ, इसके अंदर डाटा डालते जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। फिर एक सेकंड मिनट का क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। ओके 20,000 टन, इसका केजी कितना है? सर, केजी आगे बन 7 मीटर। 7 मीटर। तो वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मोमेंट इज दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 14,000 1,40,000। ठीक है। यस। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। या ओके। अपराइट भी हो सकता था, तो यहाँ पे जब जीरो आता, लेकिन ये अपराइट नहीं है, जहाज ऑलरेडी लिस्ट है। तो ओके। 1749.8 स्टार। ओके। अच्छा, ठीक। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वर्टिकल मोमेंट के लिए W विल ऑलवेज गेट मल्टीप्लाइड। यस। ओके सर। Vertical moment is weight multiplied by kg. ओके सर, थैंक यू। List moment is weight मल्टीप्लाई बाय this multiplied by center line distance. यस सर। सेंटर लाइन से लेनी है आपको, यस except the distance. Okay, let's go here. 1 second. Remember D1, we have taken the distance from center line. We have यस taken the distance from सेंटर लाइन। center line. अच्छा, ये शिप था, सपोज आपने कुछ कार्गो लोड किया। यस। चलो कार्गो ले आओ। कार्गो से नंबर 1 कार्गो होल्ड में लोड किया आपने। लोडिंग कितना? 1,000 टन लोड कर दिया। ओके। और चलो मेन डेक पे लोड किया तो केजी थोड़ा बड़ा था, 10 मीटर केजी कर लिया। ओके। तो सबसे पहली चीज है, लोड किया तो यहाँ पे तो प्लस साइन हो प्लस। जाएगा। यस। वर्टिकल मूवमेंट क्या हो जाएगा? सर 10,000। राइट। अब ये तो लोड कर लिया आपने खाली हाइट। अब कार्गो ये जरूरी नहीं है कि तुम सेंटर लाइन पे लोड कर रहे। सेंटर लाइन पे लोड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सपोज यू लोडेड हियर, उसमें ओके। डिस्टेंस दे रखी 5 मीटर, 5 मीटर फ्रॉम सेंटर लाइन, ऐसे भी दे रखे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 मीटर ले लिया सर। हाँ, 5 मीटर फ्रॉम पोर्ट। हम्म। तो अब ठीक है, लिस्ट ठीक है। मोमेंट कितना क्रिएट होगा? तो सर ये 5 into 1,000 हो जाएगा सर, 5,000। हाँ जी, 5,000 डायरेक्शन फोर्ट। बोथ साइड। गेटिंग? यस। तो डिस्चार्ज भी करो। डिस्चार्ज क्यों करते हैं? डीबैलेंस करते हैं। ठीक है, ओके। ओके। लेट्स मेक लिटिल इंटरेस्टिंग। डीबैलेंस किया आपने, सपोज यस। नंबर 5 से कर दिया आपने, तो ये डिस्चार्ज हो गया। सपोज 500 टन डिस्चार्ज किया, 500 टन ओके। आपने डिस्चार्ज बॉटम से निकाला, सपोज 2 मीटर है। ओके। तो अब वर्टिकल तो मूवमेंट कितना हो जाएगा? 1,000। बाय द वे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये मैंने पहले भी यस सर। बताया। यस सर। यस सर। मेक सेंस? एक ही टेबल में सारा काम कर रहे हैं हम लोग। ओके। और डीबैलास्ट तो किया, और जो टैंक जो था, सपोज दिस टैंक इधर पोर्ट साइड में ही था, और इसकी जो डिस्टेंस थी यहां से सेंटर लाइन से 10 मीटर था। ओके। 10 मीटर पोर्ट। 5,000 सर। अभी भी कितना हो जाएगा? 5,000 फोर्ट। अब कितना हो जाएगा डिस्चार्ज करने पर? पोर्ट हो जाएगा। नहीं सर, 4 बोर्ड जाएगा दोबारा। हाँ नहीं सर, यस, 4 बोर्ड यू जाएगा। गॉट टू बी केयरफुल। यस यस यस। अच्छा, ये फाइनल लिस्ट लिख रहे हैं हम? ओके सर, मतलब उस समय उस पोजीशन पे कहाँ पे रहेगा? ओके। तो इसमें आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड ऑल द केसेस। यू हैव कार्गो, यू हैव लोडेड, यू हैव
डिस्चार्ज और डीबलास्ट कर दिया। अब शिफ्ट भी कर दिया, आपने कुछ शिफ्ट किया कार्गो, ओके सपोज 100 टन आपने शिफ्ट किया कार्गो, और वो है 100 टन। इसका मतलब है यहाँ पे लिख दो 0, इसका मतलब ये कार्गो का वेट पे कोई असर नहीं होगा। ओके ठीक है। ओके और शिफ्ट कैसे करना है? शिफ्ट करने का दो तरीका है। आप ओके ऐसे ले गए, इस डायरेक्शन में ले गए, ओके तो इसको वी डिवाइड इन टू पार्ट्स। ओके मतलब यू शिफ्टेड अपवर्ड बाई 5 मीटर, ऐसे लिखा रहेगा, एंड टूवर्ड्स स्टारबोर्ड बाई 6 मीटर। यस ऐसे लेकिन ठीक है। सो शिफ्ट अपवर्ड बाई 5 मीटर, यानी ऊपर की तरफ आप 5 मीटर लेके गए। तो ओके मैंने क्या बताया, अगर अपवर्ड जा रहे तो शिफ्ट में केजी। वर्टिकल मोमेंट प्लस हो जाए। यस सर कितना हो जाएगा? सर 500 है जी 500। 500। देखो, इसको करो 200 टन। लाइफ भी तो ओके आसान बनानी, दो चार चीजें काटनी पड़ेगी ना। ओके ओके ठीक है 1000। 1000 अपना इजी रहेगा। ऑलराइट, ओके 5 मीटर ऊपर और 6 मीटर टुवर्ड सेंटर लाइन। 6 मीटर आया है। डायरेक्शन नोट करनी पड़ेगी हम। स्टार्बोर्ड टू पोर्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल शाबुट रिपोर्ट ऐसे बोल रहे हैं मतलब सर ये। हाँ, ओके क्वेश्चन में रहेगा, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, 6 मीटर। हाँ, तो कितना हो गया? शाबुट रिपोर्ट ये तो हो गया सर 1200 हो जाएगा ना ये तो यहाँ तो। 1200। See, I'm trying to bring her to the upright. Okay. ओके And this ओके is starboard to port, that means port. पोर्ट ओके हाँ अभी और कुछ नहीं जोड़ते, वरना ठीक है सर। आप फ्री सरफेस मोमेंट भी इसमें कर सकते थे, बट एट द मोमेंट आई एम सेइंग जस्ट keep quiet at this, because we need to understand these concepts. So what is the final weight? वेट इज 21 Final weight हो जाएगा 20,500 करेक्ट। टन। यस फाइनल वर्टिकल मोमेंट हो जाएगा, सर ये हो जाएगा ये कैंसिल हो गया, 10,000 है वन क्या? फोर वन वन फोर वन जीरो 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 14 वन ट्रिपल जीरो। पक्का? नहीं सर 151 नहीं 15 वन फाइव 15 ट्रिपल जीरो जीरो 000 नहीं आएगा। सर 1,40,000 प्लस 1 लाख 15, बना था 15 लाख। भाई 4 तो जीरो होगी। Yes, sir, यस zero सर for you. ये यस सर आएगा ना? Yes, sir. यस सर ओके। अच्छा, अब लिस्ट मोमेंट के निकालने की क्या तरकीब है? स्टार्बोर्ड लिस्ट मोमेंट कितना है, पोर्ट लिस्ट मोमेंट कितना है, ऐसे कर लो। या तुमको समझ में आ रहा है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये स्टार्बोर्ड ओके लिस्ट मोमेंट, ये पोर्ट लिस्ट मोमेंट है। सो फाइनल लिस्ट मोमेंट कितना हो जाएगा? ओके ये आ सर जाएगा ये 5 17। 549.8 टुवर्ड्स स्टार्बोर्ड। यस सर आ जाएगा हाँ सही है। यस सर अब इससे आप निकाल सकते हो केजी फाइनल, वर्टिकल मोमेंट, ये तो बताया था मैंने। यस सर डिवाइड बाय WF, वेट। तो यस ये सर जाएगा 15,000। 15 डिवाइड बाय 20,000 तो सर 7.317। 7.317 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है KM जो है 8 मीटर है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। इनिशियल देखो। ओके। हिनशिप में क्या इशू आता है? हिनशिप में बोलता है डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, हाँ KM भी चेंज हो गया। यस सपोज इट इज गिवन ओके KM for new displacement, otherwise you need to interpolate.
suppose is 7.2. थोड़ा बढ़ Suppose जाए, it's sorry, given. मतलब 8 सर point. Yeah, अच्छा. that will be given here. Okay. Little 8.100 Okay. given. अच्छा, जो कांस्टेंट डाटा प्रॉब्लम है हिंशिप जो स्टेबिलिटी में आती है, एक्चुअली दिस जनरली टेक फॉर ओरिजिनल डिस्प्ले, which Okay. is wrong actually. Are you getting it? Because KM changes. Yes, sir. KM changes. तो sir. उसमें assumption डालते हैं कि KM does not change. Assuming Okay. KM is constant for a small change in displacement. Is it clear? Yes, sir. But if it is KM is changing, then you need to compute KM for the new displacement. New displacement. Let's find out GM final. Okay. KM minus Big 3. D, 8.1 minus 7.317. 0.783. 0.783. So we have GM final, we have final list moment, we have WF. So what's wrong? Tan theta is equal to W into final list moment 549.8 divided by WF, that is 20,500 into 0.3. देखो हाँ सर ठीक तो ये आ जाएगा 549.8 divided by 20,500 into 0.783 into shift. This 10 is not working. Do you have the calci? Otherwise, yes sir I'm doing I need to work here. This is difficult for me. five four Okay. so tan theta is equal to 0.034 No, 1.96. Yes, so sir. tan inverse after tan inverse tan Hmm. inverse is 1.96 Theta is equals to 1.961. Theta is equal to 1.961 1.961 Yes, sir. degree. Okay. But that's not the way to write answer. yes sir. Okay. So I need to come to that and then you press this again. So 1 degree. 1 degree. Okay. 1 second. 1 degree, 57 minute, 42.27 second. Or round off to 1 degree, 57.7 Yes, sir. minute. And the direction will be towards starboard. Starboard. That's it. सर Yep. से डीबैलेंस वाली कंडीशन में एक डाउट था सर उसमें टुवर्ड्स स्टारबोर्ड क्यों लिया था कहाँ से डीबैलेंस किया हमने? सर स्टारबोर्ड से पोर्ट से सर स्टारबोर्ड है ना deballast. We deballasted from port. यस सर So if you are emptying something from port, your ship is going to list towards starboard, no? यस सर This is your starboard, this is your port. You are discharging from port like this. You are going to list towards starboard. यस सर नाउ क्लियर Okay. So this contains almost all operations, loading, discharging, and shifting. यस One सर operation is not there. So suppose if I need to modify, generally the question will start that the vessel is upright. I am saying vessel is already listed. Okay. yes sir
But suppose we are talking about there is a free surface moment. Free surface moment. Suppose there Sir, is a, I have a doubt, sir. You Yep. you said that the ship is already listed. Initially it was 5 degree listed. तो फाइनल लिस्ट जब निकाला हमने तो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट तो करना होगा ना सर? क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? तो 5 डिग्री इनिशियली था, हम्म तो उसके ये बाद सर आ गया हमने ना जो यार, ये जो था ये 5 डिग्री की वजह से है ना, ओके फाइनल लिस्ट मोमेंट हमारा ये आ गया, कम आ गया. अच्छा हाँ ठीक है समझ गया हम्म, Okay. समझ Suppose गया the ship is having free surface moment. So what is the function of free surface moment? The function of free surface moment is to change GM, यस सर right? यस सर बताया था last time. यस सर So free surface moment is going to impact vertical moment. Whatever is the free surface moment, suppose जो भी है Yes. 200 ton, right? You're going to add. That's it. यस If सर there is a free surface moment, you add. यस सर Make a note. Free surface moment is added to vertical. वर्टिकल मूवमेंट यस सर Find final KT. यस सर ये हो गया. हाँ. एक ये केस है. ये सारा चीज कहानी है. अब मैं कह रहा हूं कितना और शिफ्ट करें कि शिप बिकम अपराइट. ओके How much to shift to make the ship upright? राइट Suppose he asked this. See, I am introducing everything in single question. How much to shift to make the ship upright? So what is the final list moment? Final list moment is 549.8 ton meter starboard. Correct? यस सर अगर LMC is list moment caused, लिख देता हूं, list moment caused. अगर LMC इतना उसका उल्टा कर दो, इक्वल और पोर्ट में कर दो, ओके तो शिप क्या हो जाएगा? upright फाइनल लिस्ट मोमेंट इज इक्वल टू LMC हो जाए तो शिप विल बी अपराइट. हाँ हाँ सर मेक सेंस? सो अब पहला क्वेश्चन है हाउ मच टू शिफ्ट. सपोज डिस्टेंस दे रखी है, LMC कैसे निकालेंगे? W इंटू डिस्टेंस दे रखी है. सपोज एक टैंक से दूसरे टैंक की तरफ जा रहे हैं, 10 मीटर की डिस्टेंस है, इस 549.8. तो W कितना आ जाएगा? सर 54.9 54.98. कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? ये स्टार्बोर्ड में क्रिएट हो रहा है, ये पोर्ट में क्रिएट होगा. पोर्ट में क्रिएट करने के लिए स्टार्बोर्ड टू पोर्ट आपको ले जाना पड़ेगा. ये 10 मीटर डिस्टेंस शुड बी स्टार्बोर्ड टू पोर्ट. यस सर ओके इज इट क्लियर? यस सर क्लियर ऑलराइट. तो अभी नाउ व्हाट विल डू, we'll try to have a look at the second mate this thing. क्वेश्चन Let's see what kind of questions are being asked. Okay. Oh, okay. This is they are asking the different types of questions.
There are actually they are in mostly the questions are related to heavy lift or can we tackle some question? Yeah, we can tackle this question. Question number 2. Okay. This is something can be done. Okay. Okay, so let's see whether we can tackle it. बाकी जो questions हैं, they are related to free surface and that free surface thing we need to discuss in detail. But that's a simple thing actually, not Yes, broad. sir. Uh, let's solve this question. बहुत simple होना चाहिए. A ship of displacement 10,000 and initial GM 0.5 meter, 0.5 free meters. surface moment 120 ton meter is listed 2 degree to starboard. A shift of grain cargo 100 ton took place 6 meter horizontally to starboard, About 2 meter vertically upward. 2 meter vertically upward. Find the resultant list. So what to do? टेबल बनाएंगे ना सब पहले. How it is shifting? I think if want we can draw the diagram. Simply Okay. we can draw with the free help also. Okay. A shift in the grain cargo of 100 ton placed by 6 meter horizontally and to starboard and 2 meter vertically upward like this. The grain has been shifted like this. Yes, yes. Okay. It is testing your concept. Yes, sir. What to do? Start thinking. What is the resultant? What is the formula for resultant list? Tan theta, final list moment upon WF into GM. Right. First of all, we need to find the initial list moment. What is the initial list moment? There is the ship is initial list moment is W into GM into tan theta, yes. right? Yes, sir. Yes, sir. W is given 10,000. Yes, sir. GM is also given 0.5. And list is also given. But is it the what GM? So 0.5. No. There is a free surface moment. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There is a free surface moment. So, sir, इसमें वो लगेगा correction होगा. FSC. Do you know how much is the FSC? What is the definition of FSC? Yes, sir. FSC is free surface moment divided by displacement. Yes, sir. So free surface moment is how much? 120 divided by 10,000. तो वो डिडक्ट हो जाएगा ना उसी से इक्वेशन में. बिल्कुल 120 divided by 10,000. सर वो फाइनल डायरेक्ट इसको वहां पुट कर देना जीएम की वैल्यू में तो फिर वो कट जाएगा वहां. How much is that? 120 into tan theta. What is the free surface correction? So free surface correction will be 0.012. So GM fluid is
GM solid minus FSC. So this actually is GM solid. Yes, sir. Actually, this is GM solid. That's why he has given free surface. Yes, sir. Yes, Now, sir. This is GM so solid. 0.5 minus 0.012. He's testing your concept, nothing else. बताइए. Yes, sir. 0.5 minus 0.012. Answer will not make much difference, but yes, sir. 0.488. 0.488. Yes, So sir. this is GM fluid. 0.488 88. into 10, 2 degree. 2 degrees. Into All right. 10 10,000, into 10, 2 degrees. 0.488 to 10. इसका 10 function बेकार हो गया इसका मेरा. Can you give me the values or Yes, should sir. I? 0.5 into 0.488. Sir, 170.413. How much? 17? 0.413. 0.413. 413. Yes, इतना sir. मत दो यार, just round off to 170.4. 10 meter. Okay, 10 meter towards Starboard. start. ठीक है, sir. All right. Yes. So I think let's write here. Initial list moment 170.4 10 meter starboard. Yes. How much is the list moment cause? LMC. Sir. You are shifting something from here to here towards starboard, right? Yes, sir. तो सर वो पोर्ट में हो जाएगा ना सर एमसी. You are shifting from 6 meter horizontally to starboard, no? Yes, sir. So you are shifted kitna? 100 into 6. That is 600 ton meter towards starboard. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है. So what is final list moment? The final list moment will be 170.4 plus 70.4 ton meter. yes sir, plus कर देंगे. So in your question you have final. अच्छा WF क्योंकि shifting है तो ये तो सेम ही रहेगा. WF तेरे पास है already 10,000, right? Shifting. Yes, sir. So what is catch now? The catch is your GM will change. Yes, sir. Because you shifted something upward, your GM is going to change. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. How it works? Sir, अगर कोई yes, sir. Look at this. Suppose G is here, M is here, right? Okay. And you shifted something upward. Your G will shift somewhere here, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. And by how much amount? That Sir, G1 upward yes, sir. is W into D into upon D W. upon W. All right. Yes, sir. W is 100. Yes, sir. और D D कितना is शिफ्ट हुआ हमारा? 2 6 मीटर. meter. 6 नहीं 2, 2 meter. Vertical direction is 2, man. Okay, sir. Okay. Don't get distracted. You have to be second mate. And Yes, sir. displacement 10,000. All right. Tell me. So 200 upon 1 upon 100 नहीं. क्या बोल रहा है? नहीं सर 200 upon 10,000 कह रहा था. हाँ. ये कितना हो गया? 0.2 upon 100 कितना? 0.02. 0.02. 0.02 मीटर. Yes, sir. ओके. सो पहला जीएम कितना था? 2. Yes, sir. पहला जीएम कितना था? 0.5. न्यू जीएम सॉलिड कितना हो जाएगा? बताइए. So new GM slot will be जो पुराना 0.5 minus 0.02. 0.02. Yes, sir.
यस और नो? 0.4, yes sir, Sir, 0.48. ये GM था, ये पहला था, इतना Yes sir, तेरा yes sir. ऊपर चला गया, Yes sir, तो न्यू GM कितना हो गया? 0.48. 0.48 मीटर। yes sir. अब फाइनल तो फ्री सरफेस मोमेंट दे नहीं रखा, लेकिन ये फ्री सरफेस मोमेंट तो रहेगा ना। Yes sir, वो रहेगा, हाँ. ओके, GM सॉलिड, इसको FSC में कन्वर्ट करो। FSC, assuming the free surface movement has not changed, दूसरी assumption लग गई, Okay. ये लिखना पड़ेगा, assuming free FSC is surface not- moment has not changed. ओके, बिकॉज Okay. हमारे पास नहीं है, फ्री सरफेस मोमेंट नहीं है। कितना था फ्री सरफेस मोमेंट? तो स्टार्टिंग में दिया. 0.012 यार, ये तो फ्री सरफेस करेक्शन। Yes sir. सो GM फ्लूइड कितना आ गया? The GM fluid is GM solid minus FSC. It's around 0. That's it. Yes sir. You have 0.46. everything now. Yes sir. Do I need to teach you No, how to sir. calculate? No, sir. Okay, you can easily compute. So the question, this is also interesting question, and it is testing the concept.